And it was more tough for me because, as you said, I am coming from electronics and telecom background. So, POC, compiler, OS, uh, वो सब कुछ भी नहीं आता था, एकदम एलियन सब्जेक्ट है मेरे लिए. So hey everyone, welcome back to the channel. तो हमारे साथ आज हैं आशीष. He is again one of the students from IIT Bombay, Computer Science Engineering में. Currently he is doing MS by Research, right? Yeah. And Yeah. again, like our previous guest, यहाँ पे आशीष ने भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है और CS में एमटेक करना है. Hi आशीष, thank you for coming to the channel. Thank you, friends. Thank you for inviting me. ओके ये क्या चल रहा है आशीष? मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर सीएस ब्रांच वाले आप लोग सीएस में आके एमटेक दे रहे हो, क्या चक्कर क्या है, बताओ ये. वी वांट टू नो. नहीं, so there are two answers. The funny answer is कि हमें हमारी core job नहीं मिलती है, so we steal the computer science jobs. And the serious answer is कि I was from the start interested in machine learning, so I chose this path because this was a better path than continuing in electronics and telecom to pursue research and machine learning. So yeah, that was the main reason. Great. So we'll talk about the machine learning part in a while. Okay, but as far as I know that you completed your BTech, then you went for a job. Yeah. Yeah. Okay, and then you came back to academia कि नहीं भाई अब मेरे को AI में फोकस करना है. Then right. Yeah. Question will be कि when did you start thinking कि मुझे अब मुझे गेट देना पड़ेगा या फिर अब मुझे CS में स्विच करना है? So I was working in Infosys as a specialist programmer. मेरा जॉब काफी अच्छा था. It was very dynamic. It had many ups and downs. I was working with the data science team very closely. मतलब मैं उन्हें data provide करता था, हम साथ में brainstorming करते थे. And काफी problems पे, मतलब there was one problem in which we used random forest classifier. तो उस पे मतलब I was majorly involved. तो ऐसा नहीं था कि आई डिडंट हैव एक्सपोजर टू एआई इन माय जॉब. इनफैक्ट मुझे काफी एक्सपोजर था. उसके कारण दैट वाज द रीजन आई decided कि I don't want to stay on the upper level. I want to deep dive into machine learning. I want to understand research at a core level. And that is why I started looking for options ki how could I formally enter the field of AI? How could I formally enter into research, explore it? So I explored different options. तो different options में यही था कि either I do masters बाहर या फिर I do masters in India. And due to some reasons, I decided that masters in India is a better option for me, and that is when I decided कि gate तो देना ही पड़ेगा, can't escape gate. और फिर वो एक काफी बड़ा जर्नी तो कवर करना पड़ेगा before coming into getting access to the core resources and the best resources of our country. So yeah, that is when I decided I want to appear for GATE, and that is how I landed into IT. Wow. So basically you did a job. You were working closely. Then you saw कि नहीं भाई अंदर घुसना पड़ेगा. I need to deep dive. Then you got the master's. So you prepared along with job, or you took a formal drop and then prepared? So my September 2 was my last working day in my job. So मतलब आज मैंने नोटिस डाला था जून या जुलाई में, एंड देन सितंबर 2 को मेरा खत्म है, एंड सितंबर से लेके फरवरी 5 तक it was just preparing for GATE. And it was more tough for me because, as you said, I am coming from electronics and telecom background. So TOC, compiler, OS, वो सब कुछ भी नहीं आता था, एकदम एलियन सब्जेक्ट्स थे मेरे लिए. I mean, आपने कोर कुछ और पढ़ा. You had a different core. Even though I know हम लोग लास्ट मोमेंट पे पढ़ते, बट हम पढ़ते हैं, ठीक है. Doing a job, all of us, and then you started preparing. मतलब there's a complete shift, right? Subjects में what are you doing? Yeah. How did you do that? Did you take a formal coaching or what? Yeah, I took coaching. So I think GATE without coaching तो बहुत difficult है, especially for people like my background and जो job के बात कर रहे हैं, क्योंकि यार तो मोटिवेशन रहेगा ही नहीं कोचिंग के बिना. तो आई टुक दैट कोचिंग, एंड माय प्रोफेसर RSV, he
मोटिवेटेड मी कि नहीं हो जाएगा, अगर तुम डेडिकेशन के साथ करोगे यू विल गेट वॉट एवर यू वांट। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड एंड आई डिड दैट एंड आई सॉ द रिजल्ट्स। मतलब स्टार्टिंग में बहुत टफ था, बट इवेंचुअली जब वो फुल लेंथ टेस्ट हम देना स्टार्ट किए तो मार्क्स भी आने लगे, तो दिखने लगा नहीं नहीं हो रहा है, तो या Okay, I see. So 2nd September say you consistently prepared, right? You maintained the या consistency and you left everything that gave you. या लिटरली एवरीथिंग, जस्ट गेट वाज द ओनली थिंग, सुबह से रात तक Wow. But करना ही होता है, मतलब आई मीन यू मस्ट बी नोइंग, उसके बिना नहीं होगा। yeah, I mean, if you're या not dedicated or सब कुछ छोड़ छाड़ के if you're not focused, then it's very difficult, या right? नहीं हो पाएगा, राइट। Right. But since you were having already a job, so programming वगैरह did help you, right? I guess कुछ subject पे. या इट डेफिनेटली डिड। सो लाइक डीबीएमएस में, फिर ओएस में, फिर सी प्रोग्रामिंग, टीओसी कंपाइलर तो मैं नहीं बोलूंगा, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स में। Okay. So yeah, these were the subjects which have practical implementation and have practical implementations in our jobs, software developer jobs. So definitely those helped me, and not only Gate, but after I've come into this masters, मेरा job experience is helping me a long big time. It is Ah, cool. हाँ मतलब वो जो सॉफ्टवेयर लैब्स होती है Correct, फर्स्ट correct. सेम वगैरह में, हाँ, that CS9 comes very CS. easy way। Yeah. हाँ हाँ हाँ, सी एस फाइन। It So would have been cakewalk for you, right? कि अरे यार यही तो करना है. yeah, it's चलो हो हाँ जाए. एग्जैक्टली, तो वो सब बहुत मैनेजेबल हो जाता है आफ्टर यू हैव वर्क इन इंडस्ट्री। करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस मेक सेंस. तो यार यू गेव गेट, ठीक है, क्रेडिट वगैरह आ गया होगा आपका कि हाँ इस रेंज में रैंक आने वाली है, करेक्ट. तो आइडिया लग या गया होगा कि देन यू माइट हैव सम टारगेट कि यार इस आईआईटीज में तो हम जा सकते हैं, either by direct admission or by interview, correct? Certain IITs you would have target. So my question या is, your MS by research in IIT Bombay, I think at that time it was relatively new program, right? क्योंकि IIT या Bombay TARA famous है, correct? तो ये why राइट या। this is MS by research in IIT Bombay? So I was getting MS by research in ISC CDS. I was getting MTech RA in IIT Bombay and MS by research in IIT Bombay and MTech in IIT Kharagpur. Very good. So MS by research in IIT Bombay because I wanted to go into NLP, and NLP in IIT Bombay is very strong. We have good professors, we have good resources. तो NLP में जाना था, that is the main reason I came to IIT Bombay and not to ISC Bangalore. Yeah, and MS by research compared to MTech TARA because MS by research is a flexible program. You can complete it in 2 years as well, which I am trying right now. But MTech RA is a rigid 3 year program. You can't escape before that. So that was not something I was looking forward to. इसलिए मैंने RA सीधा skip कर दिया. Oh, And RA में I think आई एम नॉट वेरी श्योर उतना रिसर्च फोकस होता है या नहीं MS जितना, आई एम नॉट वेरी श्योर, yeah, I इसलिए। mean research assistant तो it depends on the project to project, right? कि आपका project क्या है, maybe. या राइट हाँ, यू आर असाइन्ड अ प्रोजेक्ट बिफोर इवन एंटरिंग द कॉलेज, सो हाँ. दैट इज ऑल्सो मतलब एनक्लोज स्पेस है जहाँ पे तुम्हें रहना पड़ेगा, यू कांट चूज, सो दैट्स व्हाई। टीए में तो टाइम नहीं मिलता है कुछ करने का. टीए में इन एंड आउट. बाय द टाइम यू कम इन उस वक्त प्लेसमेंट आता है, इन एंड आउट, यू डोंट नो क्या चल रहा है. Yes, yes, exactly. So that is good. Okay, awesome. So I see कि you have put a lot of thinking कि before coming to college कि you wanted to pursue particular field, particular Yeah. field. Let's say NLP maybe आपने might have targeted, right? How did that go? Already had कि मुझे ये गाइड को अप्रोच करना है, ये करना है. So NLP में I was more into like to be very honest, मुझे नहीं पता था कि NLP में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इंडस्ट्री में। मुझे बस ये था कि मुझे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जाना है। अभी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ही सारे मतलब बेसिकली डीप लर्निंग के टास्क होते हैं, मतलब natural language inference, text classification, all are examples of natural language understanding. So when I came here,
एमएस में आर&डी सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, सो वी हैव टू कंपल्सरीली टेक इट, एंड दैट आर&डी में द डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स गिव देयर आर&डी subject topics that we are offering R&D in this. If you are interested, mail us, give us your resume, and then we will shortlist you if we find you good. So I found the project that Preeti ma'am proposed. That project I found very interesting, and that is why I decided कि I will approach her for that project. That was a open, I mean, वो प्रोजेक्ट काफी ओपन था, उसमें हम इनोवेशंस कर सकते थे एंड थोड़ा अट्रैक्टिव था. And I had heard that Preeti ma'am is very fast in research. She doesn't she doesn't let you rest. मतलब ऐसा, she is very result oriented. So I like that approach. वैसे ही काम करना था, so that's why I approached her. With her, you should always be on your toes. Fat 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 काम Yeah, करते चलते चलो. exactly. Yeah, there's no time to rest. There's no time to waste. Yeah. Cool. So, so you, I think, to fulfill your thesis background and all, मतलब literature, Yeah. you might have taken few courses at IIT Bombay, right? Can you name? Yeah. So I had taken in the first semester fundamentals of machine learning, then NLP 6 to 6, Okay. and then R&D, and then अपना 699 software lab. So yeah, these were the subjects. And second sem में I took ASR, which is automatic speech recognition, then DLNLP, which is deep learning for NLP, and again R&D, and then there was again seminar. So हाँ, 4 हो गए थे. Awesome. And then this semester I've not taken any subject because there are placements, and I'm already, I mean, ma'am has involved me in 3 research projects, so See, nice. played. So after these 2 semesters, I assume you went for an internship at Amazon, right? So Right, yeah. So we'll come to that. So what we'll do is, generally, let's talk about the rounds. Okay. Once the rounds are there, then we'll talk about the Yeah. so that the viewers or the students who are watching now, they'll get about the rounds. And when you talk about the resources, how you prepared, they'll be able to connect more efficiently. Okay. So first question for an internship would be, how did you find that internship? Because like as far as I know, MTech students are not allowed to do internships in IT. Yeah. Then how did you find about that? So मैम ने मुझे एक दिन मैसेज किया कि the recruiter has reached out to her about an opportunity of applied scientist intern, and if she wants to recommend any student of her. Wow. So I thought, wow, it is a good opportunity, and ma'am has recommended me, it will be easy. But the next minute I get to नेक्स्ट मिनट ही सीएसई के मेल पे वो मेल था ऑफिशियली. एक दूसरे प्रॉफ ने, या दूसरे प्रॉफ ने मेल कर दिया, एंड इट वाज लाइक इट इज नो सीक्रेट, एवरीवन नोज इट. हाँ, इट्स ओपन फॉर एवरीवन. या तो आई लॉस्ट दैट चांस, बट आई वाज लाइक ठीक है, एटलीस्ट आई विल ट्राई. सो आई अप्लाइड ऑन देयर पोर्टल, एंड yeah, I mean, this is how Amazon came. Everyone applied, I think. Most of the people applied, जिसके guides favor में थे. And then there was this written test, online interview, coding round, and then online interview, and machine learning. There were 3 rounds. So 3 rounds, and you were done and dusted with the interview. Then there were results, right? Yeah. Discuss a little more in depth about those rounds. What were those rounds were, right? So can you explain a bit कि पहला round तो written round था, I guess, right? Yeah, it was a written. So we had 2 coding questions in the written round. वो coding questions were like, we can say, lead code का easy to medium level. Okay. Mostly those were, one was like literally a lead code question, another one was a problem solving based question. So yeah, easy to medium के बीच में था. It was not beyond medium. Okay, I see. And you solved both of them? Yeah. And I'm assuming कि ये elimination round रहा, shortlisting round रहा होगा, जहाँ पे those who solved went to the next rounds, right? Yeah, I think so. Even I think so. क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स भी दिए थे मेरे साथ, so they also were able to solve, and सबको मेल आया था about for the interview round.
So yeah, I think yeah. awesome awesome. ये राउंड तो अच्छा हो गया, Mhm. you solved all टेस्ट केसेस वगैरह हाँ, साथ चल गए थे, वेरी गुड। yeah, yeah, yeah. नेक्स्ट राउंड कौन सा था? राउंड 2? Next round was interview round, and again this was a coding round. So मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ये लोग इतना कोडिंग क्यों पूछ रहे हैं हमसे। माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही करता है यार, गूगल वगैरह। तो वापस से कोडिंग राउंड, इंटरव्यू राउंड था, एंड उसमें ही गेव मी वन क्वेश्चन and we discussed the solution. Now I wrote the code, but he wanted me to write every single line of the code, and he wanted me कि you yourself analyze कि ये code चलने वाला है कि नहीं. I वाओ। was like, okay, I'm confident, but he's like, you tell me if it will work or not. Like as if he will just pick up my code and compile it with a compiler. I was so मतलब काफी अच्छे से उसने वो कोड लिखवाया मेरे से, and then after writing that code there was also another question, and for that he made me write the pseudo code, and after that he also was expecting an optimization on top of it. So I would say मेरा coding round थोड़ा था grinding था. ओके, So but yeah, you remember the luckily I questions? was able to crack it. Remember the questions? So Some of us. Do you remember the question? uh, दोनों? unfortunately I don't, but I remember the coding round का एक question. So मतलब that is a very standard lead code merge intervals question. अच्छा, ओके, आई सी आई सी। या सो वो रिटर्न कोडिंग राउंड में एक मर्ज इंटरवल्स था, दूसरा आई डोंट नो, बट वर्बल राउंड में रिमेम्बर कुछ नहीं, इट्स नॉट ऑन टॉप ऑफ माय माइंड. स्टैक, क्यू, बाइनरी सर्च, डीपी, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग? सो इट वाज मोस्टली combination of all of them, like जैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, वी हैव टू कम अप विद अ ग्रीडी अप्रोच, एंड वैसा था. इट वाज नॉट लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ ग्राफ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ स्टैक और क्यू. वी हैड टू कम अप विद अ ग्रीडी सॉल्यूशन टू इट, एंड देन यूज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर लाइक हैश मैप और क्यू जो भी था. सो और बस उन्होंने प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज सॉल्विंग कराया थी. होगा कोड को। हाँ हाँ हाँ, करवाया, ऑप्टिमाइज करवाया. ओके 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 ओके, गुड गुड। तो ये राउंड? इट वाज समथिंग रिलेटेड टू सॉर्टिंग. हाँ, इट वाज सॉर्टिंग भी था उसमें, कि मतलब तुम्हें इंटीजर्स दिए हैं, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है या सॉर्ट करने थे, एंड देन उसका कुछ करना था. तो हाँ, अच्छा था क्वेश्चन, उतना टफ नहीं था पर अच्छा था. ओके ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ एनालाइज करवाया होगा आई थिंक, राइट? प्रॉपर हाँ हाँ हाँ. कोडिंग, या प्रॉपर या कोडिंग राउंड आई गेस, ठीक है, अच्छे से करवाया या होगा। प्रॉपर प्रॉपर कोडिंग अराउंड. या ऐसा कोई भी रूम नहीं छोड़ा कि मतलब सिंस यू आर कमिंग फॉर एन एमएल राउंड, एमएल रोल, तो यू आर गिवन दैट स्लैक कि नहीं ठीक है. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यार ये दे एक्सपेक्ट ये एमएल एमएल के लिए कोडिंग भी ढंग से पढ़ना कुछ कंपनीज के लिए। मतलब सब कुछ ही आना चाहिए. वो HD1 लेवल का भी कोडिंग आना चाहिए, देन एमएल तो आना ही चाहिए, वरना तो बाहर हो जाओगे. मेक सेंस मेक सेंस। ओके, तो ये राउंड भी तो अच्छा हुआ आई गेस, है ना? या यार. और ये भी एलिमिनेशन राउंड था, यू नो? हाँ हाँ, दिस वाज आल्सो एलिमिनेशन आई बिलीव, बिकॉज इसके रिजल्ट के बाद ही हमें एमएल राउंड का लिंक. तो या आई वाज सी। एन एलिमिनेशन. ओके ओके, फिर लास्ट राउंड एमएल में क्या हुआ वहां पे बताओ थोड़ा सा। तो उसमें एमएल राउंड में फर्स्ट ही स्टार्टेड विद माय रेज्यूमे. मेरे रेज्यूमे में उन्होंने सब पूछना शुरू किया कि ये क्या किया था, क्यों किया था. देन आफ्टर ही वाज डन विद माय रेज्यूमे, ही स्टार्टेड विद हिज ML question. So he started from very basic to very advanced. So basic like linear regression, gradient descent, overfitting, underfitting, and then he started slowly going up to मतलब decision tree में Gini index और information game में क्या फर्क है, क्यों है. देन लैंग्वेज मॉडल्स आता है, तो वर्ड क्या करता है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, एवरीथिंग. ही कवर द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ एवरीथिंग. वो 1 आवर का एक एक मिनट यूज किया है वरना पता भी नहीं चला उन्होंने. होगा, मुझे तो लग रहा है फिर ऐसे चला या हाँ, ऐसे करते। बहुत पूछा यार, मतलब बोलते कुछ तो छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना, सब पूछ लिया है. वाह वाह वाह, तो थर्ड राउंड के बाद व्हेन डिड यू गॉट रिजल्ट्स? थर्ड राउंड के बाद, सो मैं थर्ड राउंड गॉट ओवर ऑन थर्सडे, एंड आई गॉट द रिजल्ट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे. Yeah, I got the call for Hyderabad, a 5 month internship, but I could not go there, so my internship got transferred to Chennai, 3 month internship. आई सी, oh you got 5 months, wow यार, good. Your Yeah, but IIT Bombay doesn't allow for 5 months, exactly, so that's the point, yeah, that's why yeah, oh, yeah.
Okay, makes sense. So with 3 महीने you were there in Chennai, work from office था? या या आई वाज इन ऑफिस। मतलब उधर हाइब्रिड अलाउड था, पर मैं पीजी में रह के भी क्या ही करूँ, तो मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। Makes sense, makes sense. Okay. यार then या 3 मिनट में तो you like बहुत कुछ पूछ लिया. So now let's start about the preparation strategy. How did you prepare? Let's start with coding round. What was your strategy to prepare for coding round? ओके सो मैंने पहले आईआईटी में आने के पहले, मतलब पहले भी मैंने कोडिंग की हुई है, पर द जो जो ये गैप था बिटवीन आफ्टर यू गिव योर गेट एग्जाम एंड बिफोर यू गेट इनटू आईआईटी, यू गेट लाइक 3-4 months, राइट? तो हाँ, तो वो गैप में मैंने थोड़ा यूटिलाइज किया and मैंने लीड कोड के मैं क्वेश्चंस करता था। वो जो लीड कोड एवरीडे क्वेश्चन होता है ना, मैं वो करता रहता था रोज। Very good. तो उससे, हाँ, उससे मेरे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बन गए ऑफ कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स लाइक डीपी, ग्राफ, ट्री, ग्रीडी, सब। तो मेरे पास वो लिस्ट है, तो अभी भी मुझे अगर कोई कोडिंग राउंड में अपियर करना है तो मैं वो लिस्ट रिवाइज कर लेता हूँ। मतलब कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, वो सब टाइप के सारे क्वेश्चंस है उसमें, बैक ट्रैकिंग। तो वो रिवाइज कर लो, तो जैसे अगर मेरा कल कोई इंटरव्यू है या परसों कोई इंटरव्यू है, तो मैं वो लिस्ट रिवाइज करके एटलीस्ट, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स मैं गो थ्रू कर लूंगा। एंड सो आई कोड इन जावा, तो मैं फिर मतलब कोड भी देख लेता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। सो या माई स्ट्रैटेजी इज कि जो किया हुआ है उसको पहले रिवाइज करो, ताकि बेसिक प्रोग्रामिंग पैटर्न्स दिमाग में वापस रिकलेक्ट हो जाए, लाइक डबल पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, वो सब। एंड उसके बाद इफ टाइम बचता है तो स्ट्राइवर शीट है, फिर ऐसे और Important question. प्रॉब्लम्स तो बहुत है, नहीं हो ही नहीं पाते, मैंने जितने किए उतने भी रिवाइज नहीं हो पाते। Time कैसे हाँ, बचे यार? वही। Okay. Got अल्टीमेटली इट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एट दैट डे इटसेल्फ, क्योंकि वो अलग ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। I see. पर हाँ, उसके लिए प्रोग्रामिंग पैटर्न्स का मालूम होना भी जरूरी है। Wow. Okay. Coding तो मतलब before coming to IT Bombay, you were all like good with coding and all lead code. हाँ, मतलब आई एम लाइक एटलीस्ट 2 out of 5। आई वोंट से मोर देन दैट, पर हाँ। Now you are being टू generous, आउट but ठीक है, समझ में आ रहा है हमें. Okay. नहीं, नहीं, मैं जनरस हो रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे आजू बाजू के लोगों को देख रहा हूँ, दे आर लाइक सुपर प्रो पीपल यार। आया आया आईआईटी बॉम्बे में तो सॉल्व फुल ऑफ कंपटीशन. बाप रे, आप लोगों को देखो देने लगे कि हाँ। बहुत ये सब क्या कर रहे हैं लोग. इसलिए मैं देखना छोड़ दिया हूँ, खाली खुद पे ध्यान दो। वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. ये तो कोडिंग का. फिर हाउ डिड यू, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एमएल, क्योंकि दैट इज अ ट्रिकी पार्ट, राइट? लॉन्ग या लिस्ट, लॉन्ग. सो वन थिंग इज कि आई टुक द एफएमएल कोर्स इन माय फर्स्ट सेमेस्टर. So that course covers each and every nuts and bolts of machine learning. काफी कुछ वो कवर करता है. So I revised वो सारे notes, मैम के सारे notes, mathematically भी मैंने सब रिवाइज किया. Then मैं जो रिसर्च कर रहा था, so I told you I took an R&D subject in the first and second sem. So I revised my R&D notes. मैंने जो भी रिसर्च किया था, क्योंकि मैंने वो रेज्यूमे में इंक्लूड किया था, some questions were going to come for it. देन आई एम डूइंग रिसर्च इन एनएलपी, तो मैंने एनएलपी में जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स है, लाइक बर्ड है, एक्सएलएमआर है, फिर रोबोटा है, जो भी मॉडल्स है, टी5 है, बार्ट है, मैंने सब सब रिवाइज किए कि उनमें क्या डिफरेंसेस है. आई कीप मेकिंग माई नोट. सो I think it's important to know the basics first, and second, what you are doing, you should be thorough about it. And third, of course, linear algebra और probability मालूम होना चाहिए. तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ रिवाइज करने का, बट समटाइम्स नहीं हो पाता है. मतलब आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. वाओ. तो मतलब यू हेवीली रिलाइड ऑन योर नोट्स, जो भी कोर्सेज यू टुक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. या और I used to make notes and those helped. Yeah. और उसके बाद जो बच्चा कुछ है, आई थिंक खुद से यू स्टडीड बेसिक मैथ्स या यूट्यूब वगैरह से. आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि वहीं से पढ़े, ब्लॉग्स वगैरह से पढ़ा होगा, राइट? हाँ, मेरे उसके भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो या दोज हेल्प. मतलब मैंने जब भी पढ़ा था, मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो दोज हेल्प अ लॉट. Oh, I think these were good enough to like get you going for internships, interviews के लिए, right? या या Awesome, awesome. मतलब अमेजोन का इंटरव्यू राउंड्स मुझे लगा थोड़ा, मतलब अच्छा ही था, अच्छे लेवल का था, मैं उतना सिंपल नहीं दिया था. या That was मजा आएगा. Good, 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 good. अच्छा था. Any other interviews did you sit for apart from Amazon? आई डिड सिट फॉर IBM रिसर्च इंटरव्यूज एज वेल.
So I sat for four of them, but surprisingly, I didn't get a response from them. So I think maybe there was uh, something lacking from my end, or there must be some other candidate who must be better than me. So I gave those interviews in November uh, for different projects. Yeah, So you sat for IBM research. Okay. yeah, इसके yeah. अलावा Sorry. apart from IBM research, Uh, After I came to IIT Bombay, I don't think so. For IBM Research and Amazon, yeah. IBM research का कैसा इंटरव्यू था? If you can share. Uh, उसके कोडिंग राउंड्स नहीं थे, सो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट. सीधा I remember. Okay. सी- Okay. सीधा इंटरव्यू था. तो मतलब आईबीएम रिसर्च में आई लर्न दैट कि वॉट एवर आई राइट इन रेज्यूमे दे विल डेफिनेटली आस्क इट. सो मैंने मेरे रेज्यूमे में तभी टी5 और बार्ट के बारे में लिखा था कि आई हैव यूज्ड टी5 बार्ट. सो एवरी इंटरव्यूअर वाज आस्किंग मी व्हाई टी5, व्हाई बार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. And I agree, I did that mistake that I did not revise them thoroughly before going into the interview. So I was thoda sa guessing, thoda sa I was right. So I think that hurt me somewhere. So yeah, matlab I didn't do that same mistake while Amazon ka interview. I revised every model difference and everything. मतलब IBM रिसर्च का इंटरव्यू मस्त, मतलब प्रैक्टिस हो गया वहां पे. हाँ, पर इंटरव्यूज अच्छे थे, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गंदे थे. मतलब but I think they were requiring some more experience. Since I was just into my first semester, they required you should be in your third semester. Maybe not. Yeah. Do you तो remember उसके मैंने some? 4 इंटरव्यूज किए थे. Do you remember some? क्वेश्चंस. 4 इंटरव्यू IBM रिसर्च के 4 इंटरव्यूज. 4 different projects. Wow. Okay. Okay. Now I see. Yeah. Do you remember some Yeah. questions? Uh, so in one of the interview, so as I said कि वो मुझे पूछ रहे थे कि हाँ, उन्होंने मुझे पूछा XLMR का आर्किटेक्चर क्या है. So I was heavily using XLMR those days, and I will tell you one thing. Because of lack of revision, I didn't remember that XLMR is a encoder only model. I अरे told him it is यार, a encoder. I told him encoder decoder model. इतना गलत कैसे हो सकते हो आशीष? हाँ. That makes sense. Arey, when you're caught up in work and all, no, so it makes sense. Even I Yeah, do. yeah. Okay, but yeah, okay. So these libraries these days, I mean, एक बार आपने एक मॉडल डिसाइड कर लिया, फिर आपको क्या करना है? बस हगिंग फेस, मतलब if that is available on Hugging Face, you just take it from Hugging Face and use it. So many a times we forget that it's an encoder decoder or just an encoder. But yeah, this is not nothing to be forgotten about. XLMR encoder है, हम सबको पता होना चाहिए. तो I did this बहुत गंदा mistake at that time. So this was one interview. Another interview, code generation, GitHub code generation से relevant था उसको. तो उसमें they were very much specific again and again asking me, are you in just your first semester? What is your experience with distributed training? What is your experience with NLP? So वो सब सुन के मुझे ऐसा लग गया था कि they won't go ahead with me.